Hi students, welcome to a new and fresh class. So today we shall learn another topic of your skills of communicative English book. The topic is at the high school. Okay, so here it should be pronounced as the, not the. So at the high school. So this prose is all about the autobiography of the great, the father of our nation, Mahatma Gandhi. So first of all, we shall go through the lead-in. As you all know, Mahatma Gandhi, born in 1869, was one of the tallest leaders of the world. He was the greatest of our independence movement. He is popularly called the father of the nation. But before he became the Mahatma, that means the great soul, in his latter life, Gandhi received his early education in Rajkot English School in Rajkot in the state of Gujarat. Later it became a full-fledged high school and came to be known as Rajkot High School. Gandhi matriculated from this school in 1887 at the age of 18. After independence in 1947, the school was renamed the Mohandas Gandhi High School in honor of the father of the nation. According to several accounts, Gandhi was not so brilliant as a student. He was noted to be good at English, fair in arithmetic, weak in geography, good in conduct, and bad in handwriting. Though he didn't have any high regard for his ability, he was astonished whenever he won prizes and scholarships. Let's read the following text to know some more interesting facts of Gandhi's experience of high school days as he himself had described it in his autobiography named My Experiments with Truth. Chapter 5. Okay, so पिले माने महात्मा गांधी ऑटोबायोग्राफी तांकर आत्मजीवनी सब बेले खुद व्यक्ति द्वारा लिखा जाय थाए ये होची गोटे छोटिया अंश सो as he has written some interesting facts of Gandhi's experience of a high school days. So as the story name implies, at the high school, so you are going to know some facts and experiences of Mahatma Gandhi at the high school. तो ये जो लीड इन पार्टा को जदि ओडिया रे बुझेबी जे महात्मा गांधी जेमिति कि आमे जानिचे से थिले जड़े टॉलेस्ट लीडर्स वरिष्ठ नेता बा प्रमुख नेता मानक भितर जणे थिले एंड ही वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ आवर इंडिपेंडेंस मूवमेंट एवं आमर स्वाधीनता संग्रामर सर्वोच्च शिखर रे बा सर्वोच्च नेता सबुठारु बड़ नेता से मध्य थिले He is popularly called the father of the nation. तेणु से जातिर पिता भाव में सुपरिचित. But before he became the Mahatma, से महात्मा नाम रे संबोधित हेबा पूर्वरु जहाँकि से परवर्ती निज जीवनर परवर्ती मुहूर्त रे से महात्मा नाम रे परिचित होइथिले. गांधी received his early education in Rajkot High School in Rajkot. गुजरात रो राजकोट रे थिबा राजकोट इंग्लिश स्कूल रु से निजर अर्ली एजुकेशन बा प्राइमरी ज्ञान प्राइमरी शिक्षा ग्रहण करथिले. लैटर इट बिकम अ फुल फ्लेज्ड हाई स्कूल जहा कि सो राजकोट इंग्लिश स्कूल परवर्ती मुहूर्त रे इट बिकम अ फुल फ्लेज्ड हाई स्कूल पूर्ण विकसित होइथिला से स्कूल टी एंड केम टू बी नोन एज राजकोट हाई स्कूल एवं राजकोट हाई स्कूल. सो इनिशियली इट वाज लाइक राजकोट इंग्लिश स्कूल. आफ्टर दैट it was called as Rajkot High School. Gandhi matriculated from this school in 1887 at the age of 18. तेणु 18 वर्ष बयस रे गांधी ए राजकोट हाई स्कूल रु मैट्रिक शिक्षा समाप्त करिथिले. आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 एवं स्वाधीनता परे परे 1947 मसीहार स्वाधीनता परे परे द स्कूल वाज रिनेम्ड एज मोहनदास गांधी हाई स्कूल. से स्कूल रो पुणी नामकरण करा जाइथिला पुनः नामकरण करी मोहनदास गांधी स्कूल बोली करा जाइथिला इन द ऑनर ऑफ द फादर ऑफ द नेशन जातिर पिता
महात्मा गांधी सम्मान अर्थे ओके से स्कूल ना पुणी चेंज करा जाइथिला मोहनदास गांधी हाई स्कूल. So according to several accounts, Gandhi was not so brilliant as a student. से जने अति चालाक बा अति जने विज्ञ अति जने पाठ पढ़ुआ बा विज्ञ बा ब्रिलियंट स्टूडेंट से नथिले विभिन्न तथ्य अनुसार. He was noted to be good at English. इंग्लिश रे से तांकर दक्षता बा तांकर पढ़ापढ़ी भल थिला. फेयर इन एरिथमेटिक मैथमेटिक्स रे मध्य तांकर से भल परफॉर्मेंस भल थिला. फेयर थिला कहि परिबा. वीक इन जियोग्राफी भूगोल रे दुर्बल थिले. गुड इन कंडक्ट कंडक्ट माने होची आचरण बा बिहेवियर हाउ यू बिहेवियर एट सम particular place, that is conduct. So good in conduct and bad in handwriting. एवं हस्तलिखन रे से दुर्बल थिले बा अति खराब परफॉर्मेंस तांकर थिला. Though he didn't have any high regard for his ability, जेहेतु तांकर पाठपढ़ार दक्षता जहाँ भी थिला सेतिपई तांकर भल ना नथिला बा से केबे भी हाई रिगार्ड से केबे भी भल प्रोत्साहन मध्य पाई नाहंती. High regard for his ability, he was astonished whenever he won prizes and scholarship. जेहेतु से केबे भी तांकर भल सुनाम नथिला जो माने भल पाठ पढ़ंती सेमानक नाटा कोन हुए सुनाम हुए से लोकंकर भल हाई रिगार्ड्स अछि सोसाइटी रे बा तांकर लोक तांको सम्मान करंती तांको भल भाबरे चिन्हंती. से जिनसटा पाठ पढ़ारे तांकर से भली ना डाक नथिले मध्य he was astonished से आश्चर्य हेउथिले बराबर आश्चर्य होउथिले. एटी थरे आश्चर्य हेले नो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड सिंपल पास्ट इज यूज्ड मेनी टाइम्स टू शो सम इरेगुलर पास्ट एक्शन. अतीत रे दीर्घ किछि समय धरी घटी आसुथबा घटना को बेले बेले सिंपल पास्ट रे एक्सप्रेस करा जाय. So he was astonished से बराबर आश्चर्य होउथिले जेबे केबे भी he won prizes and scholarship. जेते बेले भी से छात्रवृत्ति आ कोनोसी पुरस्कार जितुथिले से आश्चर्य होउथिले because he was not a brilliant student. As you know, it is written that he was noted to be good at English, fair in arithmetic, weak in geography, good in conduct and bad in handwriting. Okay, so see, he was not so brilliant. So let's read the following text to know more interesting facts on Gandhi's experience of high school days as he himself has described. जेमिति कि से निज आत्मजीवनी रे आत्मलिपि रे एक कथा को लिखिछंती. My experiments with truth chapter 5. Okay, so this was the lead in उपक्रमणिका ए विषय को जिबा पाई. Now in the B section we'll see the text. Read the text silently and answer the questions that follow. Okay. I was not regarded as a fool at the high school. I always enjoyed the affection of my teachers. Certificates of progress and character used to be sent to the parents every year. I never had a bad certificate. In fact, I even won prizes after I passed out of the second standard. In the 5th and 6th, I obtained scholarships of rupees 4 and 10 respectively, an achievement for which I have to thank God. I have to thank good luck more than my merit. Okay, so first stanza देखो कौन लिखिला. I was not regarded as a fool at the high school. तेणु से कहते जे हाई स्कूल रे मु एते भी निर्बोध बा बोका नथिली. आई ऑलवेज एंजॉयड द अफेक्शन ऑफ माय टीचर्स. मो गुरु मानकर मो प्रति जो भल पाइबा सेटा मते भल लागुथिला. गुरुजनकर बा गुरु मानकर भल पाइबाटा को मु उपभोग करूथिली बा मते भारी भल लागुथिला जेते बेले से माने तांकर अफेक्शन मो प्रति शो करूथिले. Certificates of progress and character used to be sent to. देखो used to be sent. Again this is B3. Used to be sent. Used to be sent. एटा अछि V3 रे. Okay. प्रगति आउ चरित्र प्रमाण पत्र. That was the situation when character, maintaining the character
to keep up the character was also another subject. निजर चरित्र निजर आचरण को किभली भाव में आमे उच्च कोटीर रखिबा एइटा मध्य सेतबेलर पाठ्यक्रम भितर थिला तेनु सर्टिफिकेट्स ऑफ प्रोग्रेस यू नो whatever he was progressing in studies and how he is maintaining his character, for both things he used to get the certificate and that certificate used to be sent. सही सर्टिफिकेट को बराबर पठा जाऊ थिला. For irregular past action we use the model used to, you know, English रो basic classes रे मो जिनसटा को क्लियर करि सारी छी है ना एगुड़ा को पठा जाऊ थिला. So certificates of progress and character used to be sent to the parents every year. प्रत्येक वर्ष no it was a irregular past action. प्रत्येक वर्ष पाठ पढ़ार उन्नति एवं तांकर चरित्र किभली भाव में से मेंटेन करुछंती ए दुईर प्रमाणपत्र पितामाता निकट को पठा जाउथिला. आई नेवर हैड अ बैड सर्टिफिकेट आउ ए बाबद रे तेणु पाठ पढ़ा आउ चरित्रगत प्रमाणपत्र बाबद को नहीं केबे भी तांकर खराब सर्टिफिकेट नथिला. इन फैक्ट I even won prizes after I passed out the second standard. वस्तुत सी सेकेंड स्टैंडर्ड द्वितीय श्रेणी पास कला परे परे I even won prizes से अनेक गुड़िए प्राइज जीति थिले. In the 5th and 6th I obtained scholarship of rupees of 4 and 10 respectively. Okay. पंचम एवं षष्ठ श्रेणी रे यथाक्रमे से 4 टंका आउ 10 टंका से पुरस्कार राशि जीति थिले. An achievement for which I have to thank good luck more than my merit. मोर निजर दक्षता मोर विज्ञता मोर पाठ पढ़िबा बा मोर ज्ञान बुद्धि अपेक्षा मु अधिक मोर सौभाग्य बा गुड लक को एथिपाई धन्यवाद देबी. Why? Because as he told that he was not so brilliant, but when he won the prizes in standard 5th and 6th, he thought that I got something more than I deserve. तांकु मने हेइथिला जे मु जेतिकी पाइबा योग्य ताठु मुटी किछि अधिक भगवान मते देइछंती बा मु पाइछि. तेनु से कथाटी कहिले जे इन द 5th and 6th I obtained scholarship of rupees 4 and 10 respectively, कॉमा an achievement जोटा मो पई गोटे उपलब्धि थिला जोथि पई मु मोर मेरिट बा मो दक्षता अपेक्षा मोर सौभाग्य बा गुड लक को मो अधिक धन्यवाद देबी. Then the second paragraph, my own recollection is that I did not have high regard for my ability. I used to be astonished whenever I won prizes and scholarships, but I very jealously guarded my character. The least little blemish drew tears from my eyes. When I merited or seemed to the teacher to merit a rebuke, it was unbearable for me. I remember having once received corporal punishment. I did not so much mind the punishment as the fact that it was considered my desert. I wept piteously. That was when I was in the 1st or 2nd standard. There was another such incident during the time when I was in the 7th standard. Dorabji Idulji Jimmy was the headmaster then. He was popular among the boys and he was a disciplinarian. Dorabji Idulji Jimmy was the headmaster then. He was popular among the boys as he was a disciplinarian, a man of method and a good teacher. He made gymnastics and cricket compulsory for the boys of upper standard. I disliked both. I never took part in any exercise, cricket or football, before they were made compulsory. My shyness was one of the reasons for this foolness, which I now see wrong. I had then the false notion that gymnastics had nothing to do with education. Today, I know that physical training should have as much place in the curriculum as mental training. Okay. वर्तमान ये जो द्वितीय पाराटा को मु पढ़िली वर्तमान यार अर्थ को देखिबा से कहउछंती माय ओन रिकलेक्शन व्हेन यू रिकॉल समथिंग मने पकाउछंती
मोर स्मरण रोचे जे आई डिडंट हैव एनी हाई रिगार्ड फॉर माय एबिलिटी केबे भी मु उच्च स्तर प्रोत्साहन बा मोर सेते बड़ ना मोर केबे हेई नथिला भल पाठ पढुथिबा पई आई यूज्ड टू बी एस्टोनिश्ड व्हेनेवर आई वॉन प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप मु प्राय तो आश्चर्य हो जाऊली जेबे भी मु स्कॉलरशिप बा प्राइजेस जीतुली बट आई वेरी जेलसली गार्डेड माय कैरेक्टर ओके बट आई वेरी जेलसली नॉर्मल जेलसी आउ जेलसी रो मीनिंग एठी लागी नाही आई वेरी जेलसली गार्डेड माय कैरेक्टर जेलसली जहार अर्थ होउची एठी लागी छि यार अर्थ हला बीइंग अफ्रेड ऑफ लूजिंग व्हाट यू हैव किछि गोटे जिनिस को हरई बसिबार डर समस्त भितर थाए तेणु से काले निजर चरित्र नष्ट हो काले निजर चरित्र भंग काले निजर चरित्र खराब हो तेणु उत्तम चरित्र हवापाई तेणु गांधीजी गोटे डर थिला मोर चरित्र केबे नष्ट न हो मु खराब चरित्र बोली मते कहीं न कहतु तेणु यह हूँ डरयुक्त सतर्क दृष्टि मार्क द सेंटेंस बट आई वेरी जेलसली गार्डेड माय कैरेक्टर मनरे भय थाई यही डरयुक्त सतर्क दृष्टि मोर चरित्र उपरे डरयुक्त सतर्क दृष्टि मु रखी कारण मोर मते डर थिला कौन सी केतेबेले जेमिति कौन सी टीचर मते खराब न कहतु मोर कैरेक्टर रे कौन सी दाग न लागू सो आई वेरी जेलसली गार्डेड माय कैरेक्टर डरयुक्त सतर्क दृष्टि मु मोर चरित्र उपरे रखी द लीस्ट लिटिल ब्लेमिश ड्रू टीयर्स फ्रॉम माय आईज ओके तो सामान्यतम चारित्रिक कलंक ब्लेमिश द लीस्ट लिटिल ब्लेमिश ड्रू ड्रॉन सो सामान्यतम चारित्रिक स्खलन बा चारित्रिक कलंक मो आखिरु लुह बुहाई दउथिला सो गांधी वाज क्वाइट सेंसिटिव रिगार्डिंग हिज कैरेक्टर और कंडक्ट व्हेन आई मेडिटेट or seem to the teacher to the merit rebuke it was unbearable for me जेबे केबे भी मु दोषी साब्यस्त हेउथिली बा शिक्षकों को लागू थिला और seemed to the teacher to merit rebuke जेबे केबे भी मु मोर दोष प्रमाणित हेउथिला बा शिक्षकों को लागू थिला जे मु दोषी प्रमाणित होईची बोली ही मेरिट अ रिब्यूक रो अर्थ होउची जन को गाली करिबा बा भर्त्सना करिबा अति तीव्र निंदा करिबा बा जन को गाली करिबा इट वाज अनबियरेबल फॉर मी यह मो पई असह्य थिला जेबे केबे भी शिक्षक तांको गाली करूथिले बा से दोषी प्रमाणित हेउथिले बा शिक्षकों को लागू थिला से किछि भूल बा दोष करिसंती सेतबेले यह तांको पई अनबियरेबल भारी असह्य थिला because for me I remember having once received corporal punishment or physical punishment punishment by beating सेतबेले छात्र को बाड़े करी पाठ पढ़ेबा से जिनसोटा थिला हैं having once received corporal punishment एकदा से ए जो शारीरिक दंड बा माड़ खाइबा दंडटा मध्य से पाइथिले I did not so much mind the punishment as the fact that it was considered my defect. मु दोषी प्रमाणित बा दोषी विवेचित हवाटा मु दोषी बोली जेहेतु मन करा जाइथिला जेहेतु टीचर बा स्कूल जेहेतु विवेचना करिथिला जे प्रकृत रे मु दोषी स्कूल जेहेतु हा विवेचना करिथिला आ मु दंड पाइथिली तेणु सेथि पई मु एथिपई बेसी दुखित होई नथिली कारण स्कूल विवेचना करिथिला जे स्कूल भाबिथिला जे मु किछि दोष करिछि बोली आई वेप्ट पिटियसली एवं से बहुत गभीर भाव में मर्माहत हो अति दुखरे से सेदिन कांदी थिले दैट वाज व्हेन आई वाज इन द फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड जेतेबेले कि से फर्स्ट किंबा सेकेंड स्टैंडर्ड रे थिले देयर वाज अनदर सच इंसिडेंट ड्यूरिंग द टाइम व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड आ गोटे घटना तांको जीवन रे जोटा कि 7th स्टैंडर्ड रे घटी थिला दोराबजी ईदुलजी जिमी वाज द हेडमास्टर सो दोराबजी ईदुलजी जिमी तांकर से समय हेडमास्टर थिले He was popular among the boys that he was a disciplinarian जेहेतु से जड़े
श्रृंखला प्रिय एंड अ मैन ऑफ मेथड एवं जने नीतिनिष्ठ जे नीति नियम को पालन करे आम कहू मैन ऑफ मेथड गोटे नीति बा गोटे तरीका जो मैंने निज जीवन को जीवती से कहुए द ही इज अ मैन ऑफ मेथड एंड अ गुड टीचर एवं जने भल शिक्षक थे ही मेड जिम्नास्टिक्स एंड क्रिकेट कंपलसरी फॉर द बॉयज ऑफ अपर स्टैंडर्ड उच्च श्रेणी पिला से जिम्नास्टिक्स बा खेल कसरत को सी कौन करते बाध्यतामूलक कर देथिले जिम्नास्टिक्स एंड क्रिकेट एवं खेल कसरत को से बाध्यतामूलक करथिले आई डिसलाइक्ड बोथ जहाँ मु उभय विषय को मु घृणा करुथिली बा पसंद करू नथिली आई नेवर टुक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज तेणु कौन सी खेल कसरत रे से केबे भी भाग मु ग्रहण करी नथिली क्रिकेट और फुटबॉल क्रिकेट हो कि फुटबॉल हो कि जिम्नास्टिक्स हो आई नेवर शोड माय इंटरेस्ट बोली से कहउछंती बिफोर दे वेयर मेड कंपलसरी तेणु सब गुड़िक कंपलसरी हवा पूर्व केबे भी मुझे सब विषय प्रति निजर इच्छा प्रकट करी नथिली माय साइनेस वाज वन ऑफ द रीजन्स ऑफ अ फूलनेस ए जो यह मोर मूर्खामी थिला इट वाज माय अ फूलनेस यही मूर्खता पछर गोटे कारण थिला मोर उदासीनता आई वाज नॉट मच मोर इंटरेस्टेड आई वाज नॉट एग्रेसिव से खेल कुश्ती कसरत प्रति एवं जिम्नास्टिक्स प्रति बा क्रिकेट आ फुटबॉल प्रति एते मात्रा से जो इच्छुक नथिले जो साइनेस ये जो उदास रहिबा यही उदासीनता होची मोर मूर्खतार प्रमुख कारण जहाँ खराब बोली जहाँ भूल थिला मु आई वाज सो शाय फॉर द जिम्नास्टिक्स एंड ऑल द गेम्स सो दिस वाज वन ऑफ द रीजन्स फॉर द फुलनेस जहाँ को मु वर्तमान एबे मु जानी पारुची यह मोर भूल थिला आई हैड देन द फॉल्स नोशन दैट जिम्नास्टिक्स हैड नथिंग टू डू विथ एजुकेशन यह मोर से समय नोशन बा धारणा मोर भ्रांत धारणा बा मोर भ्रम धारणा थिला जे कुश्ती को खेल कसरतर पाठ पढ़ा बा एजुकेशन सहित कौन संपर्क नाही टुडे आई नो दैट फिजिकल ट्रेनिंग शुड have as much place in the curriculum as mental training तेणु एजुकेशन इज अ मेंटल ट्रेनिंग जहाँ भी आम पढ़ू एरिथमेटिक बायोलॉजी जियोग्राफी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड ऑल जहाँ किसी भी पाठ पढ़ुचे सो मेंटली वी आर बीइंग ट्रेन्ड मानसिक स्तर में आम कौन होचे ट्रेंड होचे बा प्रस्तुत होचे तेणु पाठ पढ़ाटा मेंटल ट्रेनिंग जमती है फिजिकल ट्रेनिंग तेणु शारीरिक ज्ञान बा शारीरिक फ्लेक्सिबिलिटी शरीर फ्लेक्सिबल बा नमनीय हवा दरकार तेणु खेल कुश्ती कसरत द्वारा आउटडोर गेम खेलिबा द्वारा शरीर नमनीय हुए सुशक्त हुए तेणु व्हेन गांधी फेल्ट दैट फिजिकल ट्रेनिंग इज as important as the mental training so he had written that today I know that physical training should have as much place in the curriculum पाठ्यक्रम रे पाठ पढ़ा सहित खेल कसरत को मध्य समान स्थान दिया जिबा उचित देन द थर्ड पैराग्राफ द रीजन फॉर माय डिसलाइक वाज माय कीन डिजायर टू सर्व एज नर्स to my father. As soon as the school closed, I would hurry home and begin serving him. Compulsory exercise came directly in the way of this service. I requested Mr. Jimmy to exempt me from gymnastics so that I might be free to serve my father. But he would not listen to me. Now it happened that one Saturday when we had school in the morning, I had to come from home to school for gymnastics at 4 o'clock in the afternoon. I had no watch and the clouds deceived me. Before I reached the school, the boys had all left. The next day, Mr. Jimmy, examining the roll, found me marked absent. Being asked for the reason of absence, I told him what had happened. He refused to believe me and ordered me to pay a fine of 1 or 2 annas. एबे देखिबा ए पैराग्राफटा से कहउछन जे मोर जो खेल कुश्ती खेल कसरत प्रति मोर ए जो उदासीनता थिला तार आउ गोटे कारण होची टू सर्व
as nurse to my father. मु पितांकर परिचारक बा पितांकर सेवा करिबा पई मोर प्रबल आग्रह थिला. That's why he was avoiding or Gandhi used to avoid this gymnastics and football and cricket. As soon as the school closed, जेमिति जेते शीघ्र स्कूल क्लोज हो जाउथिला, I would hurry home. से खूब शीघ्र जेते शीघ्र स्कूल बंद होउथिला से घर पाई बाहरी पडुथिले बा घर को बाहरी पडुथिले and begin serving him एवं पितांकर सेवा करुथिले. Compulsory exercises came directly in the way of this service. तेणु ए जो एक्सरसाइज ए जो खेल कसरत गुड़ाक कंपलसरी बा बाध्यतामूलक कर दिया गला एगुड़ाक वर्तमान तांको पितांको सेवा करिबा बाटरे बाधा हैला. Because Gandhi was searching for the time, he didn't want to lose a single second after the school closed to serve his father. तेणु से कौन कले मिस्टर जिमिंग को से रिक्वेस्ट कले बट टू एग्जेम्प्ट मी फ्रॉम द जिम्नास्टिक्स जे मते ए खेल क्लास रू बा कसरत क्लास रू मते बाद दबा पाई सो दैट से जमिति निज पितांकर सेवा करि परिबे. बट ही नॉट लिसन टू मी किंतु से तांको कथा सुनिले नाही. एवं गोटे शनिवार दिन किछि एभली घटना घटिला जे तांकर क्लास थिला मॉर्निंग रे बा सखाळ बेला तांकर क्लास थिला एंड आई हैड टू कम फ्रॉम होम टू द स्कूल फॉर जिम्नास्टिक्स एट 4 o'clock. एवं ए जो जिम्नास्टिक्स क्लास पाई मॉर्निंग सखाळ बेला क्लास थिला एवं तांको दिन ऊपर बेला 4टा बेले तांको स्कूल आसीबार थिला फॉर द जिम्नास्टिक्स क्लास एंड आई हैड नो वॉच एवं मो पाखरे सेते बेले कोनोसी घंटा नथिला एंड द क्लाउड्स डिसीव्ड मी as it was so cloudy जेहेतु हम मेघुआ पाग थिला. डिसीव्र मन होची प्रतारणा करिया बा धोखा देबा. तेणु बेले बेले वी गेट डिसीव्ड बाय द नेचर. जदि मेघुआ पाग होई थाए बेले बेले आमे मध्य कोन हो आमे धोखा खाऊ. वी कांट इमेजिन वी कांट प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट टाइम. सो as it was cloudy, so Gandhi couldn't imagine or couldn't predict the relevant or the exact time. And clouds deceived me before I reached. एवं सी स्कूल रे पहुँचवा आगरू इन द आफ्टरनून समस्ते तांको सांग माने पळै सारी थिले. परवर्ती दिन जेतेबेले जिमी एग्जामिनिंग द रोल नंबर गुडा को जेतेबेले चेक कले जे गला काली केउ माने प्रेजेंट थिले ही फाउंड मी मार्क्ड एब्सेंट. सेतेबेले से गांधी को अनुपस्थित थिबा लक्ष्य करथिले. जेतेबेले तांको एकटा पचरा गला जे तुमे काहे कि एब्सेंट थिलो. आई टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड. मु वर्णना कली जे प्रकृति रे कोन घटना घटी थिला. ही रिफ्यूज टू बिलीव मी. से मना करी देले मो कथा सुनिबा पाई मते विश्वास करिबा पाई बा मो कथा को विश्वास कले नाही एंड ऑर्डर्ड मी टू पे अ फाइन. एवं फाइन दबा पाई से 1 or 2 annas 1 अणा किंबा 2 अणा से मते फाइन ओडिया रे जहा कहती तंड मते फाइन दवा पाई से मते आदेश कले. I was convicted of lying that deeply pained me. How was I proof my innocence? There was no way. I cried in the deep anguish. I saw that a man of truth must also be a man of care. This was the first time and last instance of my carelessness in school. I had a faint recollection that I finally succeeded in getting the fine remitted. The exemption from exercise was of course obtained as my father wrote himself to the headmaster saying that he wanted me at home after school. एबे देखिबा पहिले 4 नंबर पैराग्राफ. I was convicted of lying. एवं मु मिछ कहूथिबा पाई दोषी साब्यस्त हेई थिली जहा कि मते गभीर भाव रे दुख देइथिला. एवं मोर निर्दोषता को मु किभली भाव रे बा प्रमाण करि थांती सेठारे कोनोसी रास्ता नथिला मोर निर्दोषता को प्रमाण करिबा पाई. एवं मु गभीर मानसिक जंत्रणा रे मु कांदी थिली. एवं मु देखिली जे सत्यर मनीष सत कहूथुबा मनीष सत्य रे चालुथिबा मनीष सबु बेले मध्य जत्नवान मध्य होबा उचित. जने सत्यवादी मनीष सत्य पथरे चालुथिबा मनीष मध्य जत्नशील होबा उचित.
यह मोर प्रथम आउ शेष घटना थिला मोर केयरलेसनेस मोर अजत्नशीलतार यार प्रथम आउ शेष दृष्टांत थिला एवं मोर मने अछि मोर हल्का मने अछि जे परिशेष रे एही फाइन दबारु मु निवृत्त हेइथिली बा मते आउ फाइन दबा पई पड़ी नथिला द एग्जेम्पशन फ्रॉम एक्सरसाइज एवं ए जो एक्सरसाइजेस बा ए जो फिजिकल एक्टिविटीज रु मध्य मु निवृत्त पाइथिली बाद पड़ी जेहेतु मोर पिता खोद मो पिता हेडमास्टर निकट को गोटे पत्र लिखिथिले जे स्कूल सरीबा परे सी मो घरे मरते आवश्यक करती मो पिता घरे मोर उपस्थिति को चाहती यह लिखि जेहेतु मो पिता हेडमास्टर निकट को पत्र प्रेरण करथिले तापरे मु एई सबु फिजिकल एक्टिविटीज बा जिम्नास्टिक क्लास रु मुक्ति पाइबारे समर्थ होइथिली। Then the fifth one, but though I was none the worse for having neglected exercise, I am still paying the penalty for another neglect. I do not know whence I got the notion that good handwriting was not a necessary part of education, but I retained it until I went to England. When later, especially in South Africa, I saw the beautiful handwriting of lawyers and young men born and educated in South Africa, I was ashamed of myself and repented of my neglect. I saw that bad handwriting should be regarded as a sign of an imperfect education. I tried later to improve mine, but it was too late. I could never repair the neglect of my youth. Let every young man and woman be warned by my example and understand that good handwriting is necessary part of education. I am now of the opinion that children should first be taught the art of drawing before learning to write. Let the child learn his letters by observation as he does different objects such as flowers, birds, etc. And let him learn handwriting only after he has learnt to draw objects. He will then write a beautifully formed hand. He will then write a beautifully formed hand. Okay. एठार गोटे बढ़िया कथा शिक्षा व्यवस्था को बा छात्र मानंकु बा समस्त को नारी पुरुष शिक्षार्थी समस्त को गांधीजी निज जीवन रे घटी थिबा जीवन से जो शिक्षा पाई जहाँ तांको बहुत किछि मात्रा रे व्यथित मध्य करिछि सही शिक्षा सही अनुभूति को से पाठक मानक सहित बांटी छंती। तेणु जिम्नास्टिक बा कुस्ती कसरत को अवहेला करिबा जोगु मु आई वाज नॉन द वर्स ये होची गोटे पिले इडियम नॉन द वर्स that is not to be harmed by तेणु एते मात्रा रे जिम्नास्टिक क्लास गुड़ा को अवहेला करिबा जोगु मोर सेते मात्रा रे क्षति होई नथिला। I am still paying the penalty for another neglect. जदियो जिम्नास्टिक क्लास गुड़ा को अवहेला करिबा जोगु मोर किछि क्षति होई नथिला। I am still paying the penalty for another neglect. आउ गोटे अवहेला पाई मु आजि मध्य पश्चाताप करुची आजि मध्य दुख प्रकाश करुची। आई डोंट नो व्हेन्स आई गॉट द नोशन एटा पिले व्हेन्स ए वर्ड मध्य मु बेसिक क्लास रे कहि सारिची व्हेन्स जनरली स्टूडेंट्स डोंट नो द मीनिंग ऑफ व्हेन्स रो माने होची कोठू बा केउ ठारू फ्रॉम वेयर व्हेन्स मीन्स फ्रॉम वेयर बट वेयर मीन्स ओनली वेयर केउ ठारे। सो गांधी सेज मु जानिनी कोठु आ केमिति मो मनरे ए भ्रांत धारणा आसिला जे गुड हैंडराइटिंग वाज नॉट अ नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन जे भल हस्तलिखन इज नॉट अ कंपल्सरी नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन शिक्षार गोटे गुरुत्वपूर्ण अंग नुहे। मु जानिनी कोठु आ केमिति मो मनरे ए धारणा सृष्टि हेइथिला जे भल हस्तलिखन
भल शिक्षार एक गुरुत्वपूर्ण अंग नुहे बट आई रिटेन्ड इट अंटिल आई वेंट टू इंग्लैंड किंतु मोर ए धारणा रे मु आई स्टिक टू द दिस नोशन ए धारणा मोर से पर्यंत मजबूत थिला से पर्यंत मु ए धारणा सहित जड़ित थिली जे पर्यंत मु इंग्लैंड जाई नथिली अंटिल आई वेंट टू इंग्लैंड मु इंग्लैंड जीवा पर्यंत बा न जीवा पर्यंत पहले अंटिल रो यूज बेसिक क्लासेस रे मु कहि सारी छी गोटे उदाहरण देवी वेट हियर एक्जाक्टली यही एग्जांपलटा मु बेसिक क्लास रे डिस्कशन कर सारी वेट हियर अंटिल द ट्रेन कम्स ट्रेन आसीबा पर्यंत एटी अपेक्षा कर बा ट्रेन न आसीबा पर्यंत एटी अपेक्षा कर गोटे माने ट्रेन आसीबा पर्यंत तेणु से इंग्लैंड जीवा पर्यंत इंग्लैंड विजिट करिबा पर्यंत तांको मनरे ए धारणाटा मजबूत थिला जे गुड हैंड राइटिंग इज नॉट अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द एजुकेशन किंतु परवर्ती मुहूर्त से जेतेबेले पर्टिकुलाली मुख्यतः साउथ आफ्रिका जेतेबेले गले सेतेबेले से वकील मानकर जेतेबेले सुंदर हैंड राइटिंग सुंदर हस्तलिखन जेतेबेले देखिले बॉर्न एंड एजुकेटेड इन साउथ आफ्रिका भली देश में जन्मित आउ सेठी शिक्षित युव लॉयर मानकर वकील मानकर जेतेबेले सुंदर हस्तलिखन से जेतेबेले से देखिले आई वाज असेम्ड ऑफ माई सेल्फ एंड मु भारी लज्जित अनुभव कली एंड रिपेंटेड ऑफ माई नेग्लेक्ट एवं मु पश्चाताप कली मु जो अवहेला कली सिंस माई चाइल्डहुड से प्रति मु गभीर पश्चाताप कली एवं मु लक्ष्य कली जे खराब हैंड राइटिंग बा खराब हस्तलिखन असंपूर्ण शिक्षार एक चिन्ह रूप से हिसाब बा परिगणित हेबा उचित असुंदर हस्तलिखन असंपूर्ण शिक्षार चिन्ह रूपे हिसाब करा जिबा उचित बा परिगणित हेबा उचित परवर्ती मुहूर्त मुता मोर हस्तलिखन को मु इम्प्रूव करिबा पाई मार्जित करिबा पाई रेक्टिफाई करिबा पाई मु चेष्टा कली किंतु यह बहु विलंब हो जाइतिला आई कुड नेवर रिपेयर द नेग्लेक्ट ऑफ माय यूथ बाल्यावस्था यौवन अवस्था मु जो अवहेला करिथिली ताकु मु पुनर्बार रेक्टिफाई करि पारिली नाही तेणु प्रत्येक युवक एवं युवती माने यंग मैन प्रत्येक युवक लोक एवं युवती माने एथिरु मोर एही उदाहरण एही शिक्षा नबा उचित एवं से माने बुझिबा उचित जे भल हस्तलिखन होउची गोटे शिक्षार एक गुरुत्वपूर्ण एवं दरकारी अंग वर्तमान मो मतरे पिला माने सर्वप्रथमे चित्र आंकिबार कला को शिखिबा उचित से माने अल्फाबेट शिखिबा पूर्वर बिफोर देन कम टू नो व्हाट आर द लेटर्स वर्ण शिखिबा पूर्वर से माने चित्र शिखिबा उचित चित्र आंकिबा उचित लेट द चाइल्ड लर्न हिज लेटर्स बाय ऑब्जर्वेशन एज ही डज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एवं से कहते जे पिला माने सर्वप्रथमे लेट द चाइल्ड लर्न हिज लेटर्स से निजर जो अक्षर गुड़ी को ऑब्जर्वेशन द्वारा अनुध्यान द्वारा प्रथमे से शिखु आज ही डज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो भाव में से डिफरेंट ऑब्जेक्ट को आम छोट छुआ चित्र करने को भल पाती तेणु से कहते भल हैंड रईटिंग जो गोटे भल भाव में गोटे छवि को आम लक्ष्य करी अविकल सुंदर भाव में अंकन करूँ ठीक सेमिति से कहते प्रथमे जड़े छात्र बा शिशु प्रथमे भल चित्र करिबा प्रथमे शिखंतु परवर्ती मुहूर्त से भल वर्ण को मध्य बा भल अक्षर मध्य तापर से माने लिखि पारिबे such as flowers, birds, etc. And let him learn handwriting only after he has learned to draw objects. एवं चित्र आंकिबा शिखि सारिबा परे ही वर्ण शिखिबा उचित बा पिला को सर्वप्रथमे जड़े शिशु बा बालक को जड़े छात्र को तार आद्य जीवन रे प्रथमे से चित्र आंकिबारे
किछि मात्रा सफल होगा उचित सिद्धहस्त होगा उचित एवं ता पर मुहूर्त सी अक्षर बा वर्ण शिखा ताको सुजोग दि जाऊ ही विल देन राइट अ ब्यूटिफुली फॉर्म्ड हैंड जदि यही भाव में सर्वप्रथमे भल चित्र आंकिबा शिखिला परे जड़े भल तार हैंड राइटिंग भल हो पारिबो बा भल अक्षर ता द्वारा लेखा जाई पारिबो। Then the sixth one, Sanskrit however proved a harder task. In geometry there was nothing to memorize, whereas in Sanskrit I thought everything had to be learnt by heart. This subject was also commenced from the 4th standard. As soon as I entered the 6th, I became disheartened. The teacher was a hard taskmaster, anxious as I thought to force the boys. There was a sort of rivalry. There was a sort of rivalry going on between the Sanskrit and the Persian teacher. The Persian teacher was lenient. The boys used to talk among themselves that Persian was very easy and the Persian teacher was very good and considerate to the students. The easiness tempted me, and one day I sat in the Persian class. The Sanskrit teacher was grieved. He called me to his side and said, "How can you forget that you are the son of a Vaishnava father? Won't you learn the language of your own religion? If you have any difficulty, why not come to me? I want to teach you students Sanskrit to the best of my ability. As you proceed further, you will find in it things of absorbing interest. You should not lose heart. Come and sit again in the Sanskrit class." Okay. So 6th paragraph कहूची संस्कृत से जहाँ भी हो संस्कृत बा संस्कृत भाषा तांको पई एक कठिन भाषा बोली गांधी को मने हेउथिला। ज्योमेट्री रे बा ज्यामिति रे से भली किछि जिंस तांको मन रखिबा को पडु नथिला, किंतु संस्कृत रे व्हेराज इन संस्कृत तांको प्रत्येक जिंस घोषिबार थिला बा मुखस्थ करिवार थिला। एवं ए सब्जेक्ट 4th स्टैंडर्ड रु संस्कृत 4th श्रेणी रु ही तांकर पाठ्यक्रम रे जोड़ा जाई थिला। जेतेबेले से 6 वर्ष बयस रे आज ही एंटर्ड द 6th I became disheartened. एवं जेतेबेले से 6th श्रेणी रे प्रवेश कले बा 6th श्रेणी को उत्तीर्ण हेले सेतेबेले से टिके उदासीन होई गले, disheartened. The teacher was a hard taskmaster. Taskmaster होची the person who makes others to do some task. पिलांठू काम आदाय करुवा व्यक्ति जन को खटेबा बा परिश्रम करेबा टास्क को जो मैंने क्यारिड आउट करती से भली भाव में जड़े से पिला खटौथिबा बा पिला परिश्रम पिलांठू पाठ आदाय करुवा परिश्रम द्वारा पिला परिश्रम करे पाठ आदाय करुला भली जड़े व्यक्ति थिले एवं भारी तत्पर थिले, एंक्सियस भारी तत्पर थिले मध्य ए सब बाबद रे। तेणु मु भाबिली आज आई थॉट टू फोर्स द बॉयज। There was a sort of rivalry होची गोटे कंपिटिशन सब बेले गोटे प्रतियोगिता मनोभाव रहुथिला संस्कृत एवं पर्सियन टीचर भितर, पारसी एवं संस्कृत यही उभय टीचर पक्ष भितर सब बेले गोटे शीतल युद्ध लगी रही गोटे प्रतियोगिता मनोभाव रहुथिला। पारसी टीचर टिके कोहल मनोभाव थिले, टिके संवेदनशील थिले, he was lenient or sensitive. The boys used to talk among themselves that Persian was very easy and से एवं पिला माने प्रायतः कथा होउथिले इरेगुलर पास्ट बिटा पिला माने प्रायतः कथा होउथिले जे पर्सियन बा पारसी भाषा संस्कृत भाषा ठारू बहुत सहज अटे एवं पारसी शिक्षक जे अछंती से टिके दयाशील आउ दयावान बिकॉज दे थॉट दैट द Sanskrit teacher is a hard taskmaster, किंतु पारसी टीचर टिके कंसिडरेट टिके दयाशील छात्र मानक प्रति। द इजीनेस टेम्पटेड मी, तेणु ए जो
सहजता ये जो सहज पाठ पार्सी को से अति सहज बोली जो भावुले ये सहज मनोभाव दिने तांको टाणी नेला दिने बाध्य कला दिने प्रोत्साहित कला जाइकरी पार्सी पढ़ा जाउथुबा क्लास रे बसिबा पाई एवं संस्कृत टीचर जते बेले लक्ष्य कले से बहु मात्रा रे दुखित हेले एवं से तांको मो एवं से मते तांको निकट को डाकिले एवं कहिले कौन तुम हाउ कैन यू फॉरगेट तुम एमती केमती भूलीगल जे तुमे होउछ जड़े वैष्णव पिता विष्णुकर जो माने उपासक तांको धर्म को कहती वैष्णव तुम जड़े वैष्णव पितांकर सुयोग्य संतान हेई तुम एक कथा केमिति भूलीगल तुम कौन निज निज धर्मर भाषा को जेतु वैष्णव हाँ तुम कौन निज धर्मर भाषा को कौन तुम्हें पढ़िब नाही जदि तुमर किसी असुविधा थाए तेबे तुम कहीं मते पचारू ना बा मो निकट को तुम संदेह डाउट नहीं कि कहीं आसुना तेणु मु मोर पारिबा पणियार सर्वोच्च स्तर रे मोर सबु बल लगाई मोर सबु बुद्धि विद्या लगाई मोर सबु चेष्टा लगाई मु जत परो नास्ति चेष्टा करी तुम मानू भल भाव पढ़ेबा पाई आज यू प्रोसीड फर्दर जेमिति जेमिति तुम ये संस्कृत शिखिबारे टिके टिके उन्नति करिवो टिके टिके आगेइबो सेतबेले तुमर आहुरी प्रबल इच्छा ऑब्जर्विंग और कीन इंटरेस्ट तुमर आहुरी प्रबल इच्छा आसीबो संस्कृत विषय को अनुध्यान करिबा पाई पढ़िबा पाई यू शुड नॉट लूज हार्ट तेणु वर्तमान तुम मन मारिबा उचित नुहे तुम उदास हेबा उचित नुहे तुम पुणी थरे आउ थरे आसी संस्कृत क्लास रे बस सो आई विल ट्राई माय बेस्ट टीचर कहते दिस टाइम आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज संस्कृत एवं लास्ट पैराग्राफ दिस काइंडनेस पुट मी टू द सेम आई कुडंट डिसरिगार्ड माय टीचर्स अफेक्शन Today, I can't but thank with gratitude of Krishna Shankar Pandya. So the Sanskrit teacher, his name was Krishna Shankar Pandya. For if I had not acquired the little Sanskrit that I learnt then, I should have found it difficult to take any interest in our sacred books. In fact, I deeply regret that I was not able to acquire more through the knowledge of the language. से कहउछंती जे संस्कृत शिक्षक मते जो पाख को डाकिकिरी ए जो काइंडनेस ए जो संवेदनशीलतार सहित बुझेइले कारण संस्कृत शिक्षक प्रथमे गभीर दुख प्रकाश कले जेतेबेले तांकर जने छात्र जाई पार्सी क्लास रे बसिथिले तेनु परवर्ती मुहूर्त रे मो प्रति से जो दया भाव He was a hard taskmaster earlier, but after this incident, when he became quite considerate for Gandhi, so he says that this kindness put me to the same. शिक्षकों मते जो बुझेइबाटा मते टिके लज्जित करिथिला एवं तांकर ए जो अफेक्शन तांकर ए जो भल पाइबा तांकर मो प्रति जो संवेदनशीलता को मु अस्वीकार करि पारली नाही. Today I can't but thank with gratitude of Krishna Shankar Pandya. आज मु कृष्ण शंकर पांड्या को कृतज्ञता सहित धन्यवाद न देई मु रही पारु नाही. फॉर इफ आई हैड नॉट एक्वायर्ड द लिटिल संस्कृत दैट आई लर्न देन से समय मु जो अल्प किछि संस्कृत शिक्षा करी जदि मु करी नथांती आई शुड हैव फाउंड इट डिफिकल्ट आमर जो पवित्र हिंदू धर्मर जो पवित्र धर्म ग्रंथ गुड़िक रही जो गुड़ कि प्रायतः संस्कृत भाषा रे लिखित से संस्कृत भाषा गुड़ी को पढ़िबा दिगरे मोर मु इच्छा प्रकाश करि पारि नथांती जदि से समय मु संस्कृत किछिटा अध्ययन जदि करि नथांती आमर जो पवित्र धर्म ग्रंथ गुड़िक रही से धर्म ग्रंथ गुड़ी को पढ़िबा पाई अनुध्यान करिबा पाई मोर इंटरेस्ट कोठु आसी थांता बिकॉज दोज सैक्रेड बुक्स हैव बीन रिटन इन संस्कृत. इन फैक्ट आई डीपली रिग्रेट दैट एवं मु गभीर शोक प्रकाश करूची बा गभीर मु अनुतप्त जे आई वाज नॉट एबल मोर थ्रू नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज. ए संस्कृत भाषार आउ टिके सविशेष अनुध्यान आउ टिके सविशेष पाठ पढ़ा मु संस्कृत भाषा रे करि पारली नाही जोथि पाई मु गभीर शोक प्रकाश करूची बा गभीर दुख करूची बा मु अनुतप्त हेउची.
M.K. Gandhi. So, in 7 paragraphs, Gandhi has written, a part of his life at the high school. Now, एबे C column रे देखिबा about the author बा लेखकंक बाबदरे किछि मोहनदास करमचंद गांधी 2nd October 1869 to 30 January 1948, it was his lifespan, was India's greatest leader who employed non-violence to lead the successful campaign for India's independence from British rule, and in turn inspired movements for civil rights and freedom across the world. The story of my experiments with truth, Hind Swaraj, or Indian Home Rule are some leading books by Mahatma Gandhi. In the present extract, Gandhi focuses on his life and learning at high school. A sentence ta कही सारे तबे मोहनदास करमचंद गांधी 1869 मसीहा अक्टोबर मास 2 तारिख रु 1948 मसीहा जनवरी 30 तारिख पर्यंत जहाँकर जीवन काल थिला was India's greatest leader, भारतर सबुठारु महानतम नेता से थिले, who employed non violence. हमें जानिचे गांधींकर अहिंसा नीति पृथ्वी सारा विदित आचरित एवं अनुसरित, who employed non-violence to lead the successful campaign. से तांकर सफल अभियान आरंभ करिथिले भारतर स्वाधीनता पाई, ब्रिटिश रूल रु बा ब्रिटिश शासन रु मुक्त हेबा पाई से सफल अभियान आरंभ करिथिले, जहा कि परवर्ती मुहूर्त रे आंदोलन रूप नैथिला. ओके, इंस्पायर मूवमेंट्स फॉर सिविल राइट्स, मानवीय अधिकार एवं स्वाधीनता पाई पृथ्वी सारा मानवीय अधिकार बा मानवीय स्वतंत्रता एवं मुक्ति आंदोलन रूप रे यह तांकर जो सफल अभियान परवर्ती मुहूर्त रे मुक्ति आंदोलन रे परिणत होइथिला समग्र पृथ्वी सारा. The story of my experiments with truth. So these are the 3 books. The story of my experiments with truth, Hind Swaraj, or Indian Home Rule are some leading books by Mahatma Gandhi. ओके, सो पे मैंने एबे देखिबो नोट्स एंड ग्लोसरी तमर डी सेक्शन रे जो एक्सप्लेन मु तुमको कली जो डिफिकल्ट वर्ड तार सब मीनिंग गुड़ाक अच्छी, लाइक रिकलेक्शन, जेलसली, ब्लेमिश, कॉर्पोरल पनिशमेंट, और पनिशमेंट बाय बीटिंग, जन को बाड़ी की दंड दबा, ऑब्टेन, देन डिसिप्लिनरियन, देन gymnastics, curriculum, exempt from, refuse, convict, anguish, mental suffering, तीव्र मानसिक जंत्रणा बा दुख, be the non the worse, एटा गोटे idiom बा रूढ़ी, notion, retain, repair the neglect, be of the opinion, commence, become disheartened, उदासीन हेबा बा आशा छाड़ी देबा, hard taskmaster, then rivalry, lenient, considerate, the best of one's ability, as well as one can, जत परोनास्ति चेष्टा करिबा जो कहती, observing means deep or keen, प्रबल आग्रह, and sacred means पवित्र धर्म ग्रंथ, गीता हो, भागवत हो, ये सब. So now in the E section, so we have E section, F section, G section, H section, I section, and J section. Okay, D, E, F, G, H, and I. So many short questions are there. So if you find in the E section, let's understand the text. So what I seek from you people, जे तमें माने प्रथमे जो गद्यटी गांधींकर आत्मजीवनी गोटे छोटिया पार्ट, गांधी वाज अ ग्रेट पर्सन, तांको जीवनर गोटे छोटिया अनुच्छेद को आम पढ़िले जो थी कि से
ବାସ୍ତବତା ସହିତ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଭଲ ହସ୍ତାକ୍ଷର ବା ହସ୍ତଲିଖନଟା କେତେ ଯେ ଜରୁରୀ ନିଜ ଜୀବନର ଘଟଣାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। that students first of all should learn good drawing before they come to writing the letters, ଯାହାକି ଛାତ୍ର ସମାଜକୁ ବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ to be better for their betterment, because as he considered that bad handwriting is the symbol of an imperfect education. असंपूर्ण शिक्षार सूचक हेउची खराब हाथ लेखा बा हस्तलिखन. Okay. So if you see there are 52 number of questions. There are 52 number of questions in the E block. Let's understand the text कहिकरी ए क्वेश्चन गुड़ाकर आंसर जदि तुम्हें करि पारिबो तबे टेक्स्ट रे जहाँ लेखा अछि ताकू बुझी पारलो बोली कथाटा प्रमाणित हेबो. तेणु सो व्हाट आई सीक फ्रॉम यू पीपल जे प्रथमे ए स्टोरी टी को भलो भाबरे पढ़ी सेतिर जो डिफिकल्ट वर्ड अछि तार माने को भी वर्तमान बुझेई सारी छी. सो यू शुड आंसर दिस फ्रॉम योर ओन, कारण यही सब प्रश्न गुड़िक हार्डली 2 to 3 लाइन्स हम. तेणु तुम्हें यह निज भाषा अति दीज आंसर्स आर वेरी ब्रीफ. दीज आर नॉट द लॉन्ग एसे, दीर्घ उत्तरमूलक नुहे. दीज आर द वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस. सो लेट अस डिस्कस ओनली फ्यू ऑफ देम. सो इट इज अप टू यू टू फाइंड आउट ओनली द आंसर्स. दोज आर वेरी शॉर्ट. Okay ji, what is a biography and what is an autobiography? As I told you, biography is the life story of a person written by someone else. आत्मजीवनी. Okay, आउ जनक द्वारा जदि लिखित होइथिबो ताकू कहबा biography. But if the person writes himself, किंतु निज जीवन बाबद रे who writes himself about his life story, this becomes an autobiography. Auto माने स्व, or by himself or herself. निज द्वारा लिखित होइथिले ताकू कहबा ऑटोबायोग्राफी. आउ जने केही जति लिखिथिबे that is simply called as biography. Is the lesson or biography or an autobiography? Support your answer with reasons. So this lesson is an autobiography. Why? Because Gandhi describes his own experience of high school days. निज जीवनर ये जो हाई स्कूल पीरियड को से निजे से उल्लेख करिसेंती. एंड फर्दर द लेसन बिगिन्स विथ आई व्हिच रिफर्स टू गांधी. एवं मु कहि से निज को संबोधन करिसेंती. सो दिस इज एन ऑटोबायोग्राफी. वाज गांधी गुड एट स्टडीज? वाज गांधी गुड एट स्टडीज? हाउ विल यू सपोर्ट योर आंसर? सो से कौन पाठ पढ़ारे भल थिले कि? सो से बेस्ट नथिले. ही वाज नॉट सो ब्रिलियंट. ही वाज नॉट द फास्ट रैंकर. प्रथम स्थान हुए तो से अधिकार ग्रहण करू नथिले किंतु से पाठ पढ़ारे गुड थिले. यस, वी कैन से दैट ही वाज गुड एट स्टडीज. व्हाई? बिकॉज दीज लाइन्स सपोर्ट्स. ही वाज नोटेड टू बी गुड एट इंग्लिश. इंग्लिश तांकर भल थिला एवं फेयर इन अरिथमेटिक. प्राय पाखापाखि भल थिला. कोथरे? अरिथमेटिक रे. वीक इन जियोग्राफी. जियोग्राफी जियोग्राफी बा भूगोल रे से टिके दुर्बल थिले. एंड गुड इन कंडक्ट. बिहेवियरल और तांकर जो आचरण रही थिला स्कूल रे विद्यार्थी मानक सहित एवं अन्य गुरु गुरुजन मानक सहित तांकर आचरण भल थिला. एंड बैड इन हैंड राइटिंग. ओके, सो ही रिग्रेटेड और लाइक से बहुत समय दुख प्रकाश करिसेंती. जीवन शेष समय पर्यंत से कौन करथिले? से रिपेंट करथिले, से पश्चाताप करथिले जे जेहेतु तांकर हस्तलिखन भल नथिला. So how will you support your answer? Then did his teacher like him? तांको शिक्षक माने कौन तांको पसंद करुथिले कि? Again this line supports this statement. कौन से लाइन टा ना? I always enjoyed the affection of my teachers. मोर शिक्षक मानकर मो प्रति जो माने जो स्नेह भाव थिला ताहा मते बहुत आनंद देउथिला.
I was blessed for that. मते अनुभव हेउथिला मु जेमिति ठाकुरंगठु वरदान पाइछि बा ठाकुरंकर आशीर्वाद रु मते एभली शिक्षक मिलिछंती जे मते स्नेह करंती. ओके, What sorts of certificates were sent to his parents? देखो एगुड़ा कहूँ बहुत सहज प्रश्न निजे दवाई चेष्टा करिवो. Certificates of progress and character used to be sent. So directly you can get it from the books. Sorry, from the book. When did he win prizes? Okay. After he passed out of the second standard. After he passed out of the second standard, Gandhi won prizes. Which standard did he get scholarship in? को standard रे से scholarship पाई थिले? Scholarship से पाई थिले, in the 5th and 6th standard. In the 5th and 6th standard. Answer of these questions. E block रे अछि 52 questions. So answers are very brief or short. Okay, so you just search the answer by your own. Which standards did he get scholarships in 5th and 6th standards? Who did he thank more for his scholarship? से जो छात्रवृत्ति पाइथिले सेति से कहा को बेसी धन्यवाद दउथिले, to his good luck, because he was not so brilliant, but when he obtained scholarships of rupees 4 and 10 respectively, an achievement for which I have to thank good luck more than the merit. So एई भली भाबरे अनेक गुडी एमिति प्रश्न रहिछि, from paragraph 1, paragraph 2, paragraph 3, 4, 5, 6 and somewhat 7. Okay, so এই सब क्वेश्चंस गुडा करो आंसर तुमे करिया पई चेष्टा करिवो, and in the next class we'll start solving questions from F, G, H, I and J block. At the high school रो जो exercises रही से exercises गुड़ा को आज हमें करिबा. So see, प्रथमे देखिबा the E section. Okay, let us understand the text. तो किछि क्वेश्चंस पिले अछि, ए क्वेश्चंस रो आंसर गुड़ा को हमें these are the very short questions, so we need to find out the answers. What is biography and what is an autobiography? So a biography is the life of a person written by someone else, whereas an autobiography is an account of a person's life written by that person. Is this lesson a biography or an autobiography? So this lesson is an autobiography, and in this lesson Gandhi describes his own experience of a high school days. Further, the sentence, he has written, he has described himself as I, like the lesson begins I, which refers to Gandhi. Was Gandhi good at studies? How will you support your answer? Yes, he was good at studies because he got the affection of his teachers, and sometimes also he along good certificates of progress and character, and he also won prizes in the prizes just after the second standard. Did his teacher like him? Yes, his teacher liked him. What sorts of certificates were sent to his parents? Certificate of progress and character were sent to his parents every year. Which standard did he get scholarships in? So he got scholarships in 5th and 6th standard. What were the amounts of his scholarship? The amounts of scholarship were 4 and 10 in the 5th and 6th standards respectively. Who did
he thanked more for his scholarship, himself or his good luck? Directly you can get the answer, like he thanked his good luck more than his merit. Then what do you know about Gandhi as a person? Okay, so Gandhi was a person who was quite conscious about his character than anything else, and he was also a learner, a lifetime learner, because even in the latter part of his life he tried to improve his handwriting, but he couldn't make it. That is the other thing. But he is a great person, because successful people or great people, they continuously learn from their mistakes. Now from the paragraph 2, what was he very much careful about? So he was very much careful about his conduct or his character. How did he react when blamed? When blamed, it tears, he used to cry, or it drew tears in his eyes, and it was unbearable for him. What was more important for Gandhi, winning prizes or building characters? No doubt, building character was very much important for him. When did he get physical punishment? He got physical punishment when he had committed any mistake. Who was the headmaster? Mr. Dorabji Idulji Jimmy was the headmaster. Was he popular, and why? Yes, he was popular among the boys because he was, yes, the 16 number questions. Was he popular and why? So directly देखो बही रे तमरो यार आंसर टा मध्य देइची. Mr. Dorabji Idulji Jimmy was the headmaster, and he was popular among the boys as he was a disciplinarian. Okay, so the 15th question is, who was the headmaster? Mr. Dorabji Idulji Jimmy was the headmaster, and why he popular? Because he was a disciplinarian. A man of method and a good teacher. What was made compulsory for upper standard boys? Gymnastics and cricket were made compulsory for upper standard boys. I disliked both. What does both refer to? Here both refers to gymnastics and cricket. What was the reason for Gandhi's dislike for cricket and gymnastics? Gandhi's shyness was the reason for his dislike for cricket and gymnastics. Was the headmaster a lover of games? Yes, the headmaster was a lover of games. What false idea did Gandhi have about games? Gandhi had a false idea that gymnastics had nothing to do with education or mental training. What were his views on games later? Later his views on games were that games should have much more place in the curriculum as mental training. Then from the paragraph 3, what was the special reason for Gandhi's dislike for gymnastics? The special reason for Gandhi's dislike for gymnastics was his keen desire to serve as a nurse to his father. Compulsory exercise came directly in the way of this service. What was the service? So compulsory exercises came directly in the way of this service. The service was to serve as nurse to his father. Did the headmaster grant his request, and why? No, the headmaster did not grant his request because he had made gymnastics compulsory for the boys of upper standard, and Gandhi was in upper standard. Why did he get to the school late? He got to school late because he had no watch and the cloud deceived him. Clouds deceived him. How? So due to the clouds, he could not know the time and he could not attend the gymnastics class in time. Did the headmaster believe what he said? No, the headmaster did not believe what he said. How much was he fined? He was fined 1 or 2 annas.
What was he accused of? Was the accusation proper? He was accused of lying, and no, the accusation was not proper, because Gandhi told what had actually happened with him. What pained him so much? Gandhi was convicted of lying, and this accusation pained him so much. Then from the paragraph 4, what lesson did he learn from it? The lesson he learned from is that a man of truth must be a man of care. Was he careless in school later? No, he was never careless in school later after that incident. Did he really have to pay the fine? No, he didn't really have to pay the fine. How was the fine exempted in the end? The fine was exempted in the end when his father wrote a letter to the headmaster. Then from the paragraph 5, what was the other neglect Gandhi talked about? The other neglect Gandhi talked about was his bad handwriting. What was his earlier notion on handwriting? His earlier notion on handwriting was that good handwriting was not a necessary part of education. When and where did he realize that his notions were wrong, and what made him think so? Later in South Africa, he realized that his notions were wrong. He found the beautiful handwriting of the lawyers and young men born and educated there, but his own handwriting was bad. So this made him think so. What were his views on handwriting? His views on handwriting was the bad handwriting should be regarded as a sign of an imperfect education. What was his advice to young men and women in this regard? In this regard, he advised young men and women that they should be warned by this example and understand that good handwriting is a necessary or integral part of the proper education. Then from the paragraph 6, there are few questions. So why did Gandhi consider Sanskrit harder than geometry? Gandhi considered Sanskrit harder than geometry because there was nothing to be memorized in geometry, whereas everything had to be memorized in Sanskrit. Which class was Sanskrit introduced in? Sanskrit was introduced in 4th class. Why did Gandhi say about Sanskrit? What did Gandhi say about the Sanskrit and Persian teacher? Gandhi said that Sanskrit teacher was a hard taskmaster, but the Persian teacher was quite lenient and sensitive to the students. Were they on good terms? Quote the sentence from the text in support of your answer. No, they were not on good terms. And the sentence supporting this is there was a sort of rivalry going on between the Sanskrit and the Persian teacher. What tempted him to sit in the Persian class? The boys used to talk among themselves that Persian was very easy and the Persian teacher was very good and considerate. So this easiness tempted him to sit in the Persian class. So how did Sanskrit teacher feel about it? The Sanskrit teacher felt very unhappy about it. Why did he think it necessary for Gandhi to study Sanskrit? So Gandhi was the son of a Vaishnava father. Exactly, he told this to Gandhi. Gandhi was the son of a Vaishnava father and he should learn the language of his own religion. So he thought it is necessary for Gandhi to study Sanskrit. Then from the paragraph 7, we have a couple of questions. Did he come back to the Sanskrit class and why? Yes, he came back to the Sanskrit class because the Sanskrit teacher made him understand about the importance of Sanskrit and his religion and assured him to help in his studies. What put him to shame? The kindness of Sanskrit teacher put him to shame. Who was his Sanskrit teacher? Mr. Krishna Shankar Pandya was his Sanskrit teacher. How did the study of Sanskrit help him later? The study of Sanskrit helped him later to take interest in the sacred books.
What feelings did Gandhi have for his teachers? So Gandhi thanked with gratitude to his teachers and mostly to the Sanskrit teacher. Okay. So पिले वर्तमान देखिबा F block रो क्वेश्चंस रे हमर किछि क्वेश्चन आसुची लाइक लेट्स सम अप इथला E block रो क्वेश्चंस F block रे आसुची गुटे the present text at a high school is built of main idea and supporting ideas. The text title itself is the main idea or theme. The facts or informations presented in the paragraphs from the contents or sub-themes or supporting ideas. Given below is a table which shows a well-knit structure of the text. Some facts or informations are missing in it, and complete the table using the required information, choosing the help box. Okay. तेणु कौन कही पे देख प्रत्येक पाराग्राफ रे गोटे मेन आइडिया अच्छी आ गोटे सपोर्टिंग आइडिया अच्छी तो आमको ताकू आइडेंटिफाई करने को पड़ो जमीती कि देख पेज नंबर दिस इज पेज नंबर 35 ओके लेट मी राइट हियर पेज नंबर 35 देख पाराग्राफ 1 रे दीटा कथा कह जाइए अबाउट हिज स्टडीज एंड रिवार्ड ही वॉन द स्कॉलरशिप एंड ऑल इन पैराग्राफ 2 about the punishment about the his punishment and about the headmaster. In paragraph 3, you can find out whatever were regarding the games, and in paragraph 4, how the exemption from fine. Okay, after he wrote a letter to his, headmaster. So exemption from fine. In paragraph 5, it was all about his handwriting. In paragraph 6, it is all about the subjects and something about his teachers. And in paragraph 7, he had described about his teachers. Okay, if you see the paragraph 7, about the Krishna Shankar Pandya, this kindness put me to the same. I could not disregard my teacher's affection. Today I can't but thank with gratitude of Krishna Shankar Pandya. For if I had not acquired the little Sanskrit that I learnt, then I should have found it difficult to take any interest in our sacred books. In fact, I deeply regret that I was not able to acquire more through knowledge of the language. Okay, so paragraph 7 रे से निजर टीचर कृष्ण शंकर पांड्यांग विषय कहते. Okay, now see तमरो G block रे it's a kind of activity or role play. देखो read the following conversation between Gandhi and Sanskrit teacher. Okay, तो लिखा है your teacher will read out the conversation, listen to him or her, follow the dialogue while listening. Your teacher will act your character of Gandhi's Sanskrit teacher and the class. तेणु ये हूँ गोटे डायलॉग कन्वर्सेशन टोटाली आम ये देखा like your teacher will become, sometimes your teacher will become the Gandhi and you will become the Sanskrit teacher, and sometimes you will become Gandhi and the teacher will become
the Sanskrit teacher. Okay. So देखो पहले आमर जी ब्लॉक रे कौन लिखी रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन गांधी एंड द संस्कृत टीचर. योर टीचर विल रीड आउट द कन्वर्सेशन, लिसन टू हिम और हर, फॉलो द डायलॉग व्हाइल लिसनिंग. योर टीचर विल एक्ट out the character of Gandhi's Sanskrit teacher and the class Gandhi. Next तापर रोल चेंज हो जीवो. The class acts the Sanskrit teacher and your teacher as Gandhi. तो ये हूँ गोटे कन्वर्सेशन जहाँकि क्यारेक्टर चेंज होकरी माने योर टीचर आउ क्लास एमान भितर क्यारेक्टर चेंज होकरी कन्वर्सेशनटा हम. लाइक संस्कृत टीचर, हेलो मोनिया, हाउ आर यू? Gandhi says, fine. Sanskrit teacher, I hear you are sitting in the Persian class. Gandhi says, yes sir. Sanskrit teacher, what prompted you to do so? Gandhi says, Persian is easy sir. Sanskrit teacher, but Sanskrit is the language of our culture, so you should study the language by any means. Gandhi says, Sanskrit is very difficult for me. Then Sanskrit teacher, why do you think so? Gandhi says, because everything has to be learnt by heart. Sanskrit teacher, that's not the case. Manu, come to me. I'll help you learn Sanskrit with ease. Gandhi says, thank you for the offer, sir. तो ये कौन है पे देख ये गोटे कन्वर्सेशन यहाँ तुम क्लास कंडक्ट करा. बी सेक्शन कहूँ योर टीचर विल कंडक्ट अ क्विज ऑन द लेसन. ही और सी विल ऑर्गेनाइज और एडमिनिस्टर द एक्टिविटी फॉलोइंग एवरी स्टेप एज शोन इन अ सिमिलर क्विज प्रोग्राम अंडर द लेसन फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ. द Your teacher will conduct a quiz on the lesson. He or she will organize or administer the activity following every step as shown in a similar quiz program under the lessons Festival of Northeast India in the K block. Let's do the activity. तो देखो ये जो G सेक्शन रो B ब्लॉक रे से कौन कहूँ G सेक्शन रो B ब्लॉक रे जे गोटे एक्टिविटी देछि तुम पेज 65 रे. तो सही अनुसार कौन है जे 10टा सेट्स 10टा क्वेश्चन बना जीवो पैरेलली 5 and 5. तो सेथिरे वन लाइन सेंटेंस किछि रहिबो तमे तार आंसर करिवो. सेथिरे यस नो क्वेश्चन मध्ये किछि रहिबो आउ सेथिरे किछि लाइक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहिबो. यू नीड टू टिक द करेक्ट वन. गोटे एग्जांपल देखो. फॉर एग्जांपल कहूची लाइक हु वाज अ ओके जमीक देख हु वाज अ डिसिप्लिनरियन एटा हला फर्स्ट क्वेश्चन. देन ऑब्जेक्टिव टाइप रो क्वेश्चन ना सॉरी यस और नो टाइप रो क्वेश्चन. Once Gandhi had to attend gymnastics at 4 o'clock. Whether this is true or false. ये गला yes no questions. And third type रो question हबो what was Gandhi convicted for? कोथि पई दोषी तांको गांधी को दोषी साब्यस्त कराइतला. For example, lying, cheating, scolding or stealing. The correct one is lying. तो ए एक्टिविटी टा तुमको टीचर ए बोली क्लास रे क्वेश्चंस किछि बनेइबे सेथुरु तुमे वन लाइन क्वेश्चंस रो किछि आंसर दबो किछि yes no टाइप रो क्वेश्चन आंसर दबो एंड चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन रो आंसर दबो. नाउ इफ यू सी द एच ब्लॉक देखो एच ब्लॉक रे कोन देछि पिले अनबियरेबल गोटे वर्ड अछि. ओके द वर्ड बिगिन्स विथ ऑन which is a prefix added to the word bearable. A prefix is a letter or a group of letters added to the beginning of a word to change its meaning. Unbearable means not bearable. So un is the negative prefix and when it added to a word the new word conveys opposite meaning. The किछि words अछि जेमिति कि देखो abnormal, then disappear, impossible, misunderstand, demerit, illegible, intransitive, unlucky. Okay, so how these words have been formed, so you need to find out the prefix root. Okay,
सो हम देखिबा abnormal, so ab plus normal. Disappear, dis is the prefix plus appear. Impossible, im plus possible. Misunderstand, mis plus understand. Demerit, d plus merit. Illegible, that is ill plus legible. Okay, I am writing this ill plus legible. Intransitive, in plus transitive. And unlucky, that is un plus lucky. Okay, now see, rewrite the following sentences replacing the underlined words by single words with their opposite or negative meanings. For example, Swarupa's achievement is not believable. So Swarupa's achievement is unbelievable. Okay, सेमती देख वर्तमान बी ब्लॉक रे किसी क्वेश्चंस देइछि. फर्स्ट वन, remote tribal areas among hills and forest are not still reachable. That means, you know, এটা মই কমপ্লিটটা লিখুনি. সো রিমোট tribal areas among hills and forests are still, देखो पहले ये कौन करी लाइक आर लिखी नॉट अंडरलाइन करी नॉट स्टिल रिचेबल अपहंच. ओके, सो सॉरी रिचेबल. रिचेबल. सो आमको ये कौन करिया पड़िबो, ये जो नॉट आउ रिचेबल ए दुटा को अंडरलाइन करिछि. ए दुटा वर्ड मिसिले जहा हबो नॉट रिचेबल ए नॉट रिचेबल दुटा वर्ड पे हमको गोटिए वर्ड चूज करबा को पड़िबो. सो आम ये कौन करि परिबा ना रिमोट ट्राइबल एरियाज एमंग हिल्स एंड फॉरेस्ट आर स्टिल, द आंसर इज आर still unreachable. Okay, एबे भी से गुडी को अपहंच. See the second bit, the younger generation is not interested. Not interested को हमें कौन लिखि परिबा uninterested. The third one, the stranger did not talk in a polite manner. Okay, so the stranger talked. Third one, the stranger, से जो अजना लोकटी, the stranger talked in an impolite manner. Talked, देखो did talk मिसी के गला talked in an impolite manner. Okay. Many people are not happy with what they have. So many people are not happy जगह लिखिबा कोन unhappy with what they have. Dull weather does not make us active. So does weather makes us inactive. Does weather makes us, you know, does plus make, this becomes makes. So makes us inactive. The sixth one, human wants are not limited. That means human wants are unlimited. The seventh one, they are not managing the organization properly. एटी देखो not managing आउ properly ए दीटा वर्ड तले अंडरलाइन अच्छी. So not managing properly आको आमे लिख परिबा mismanaging using the prefix miss. So they are mismanaging the organization. एटी मो इटा को completely सेति पे लिखुची. So they are mismanaging the organization. Okay. Her inaugural speech was not motivating. That means her inaugural speech was demotivating.
motivating. The ninth one, they did not behave their guests well. Not behave au well aku मिसेक लिखि परिबा कोन misbehaved. So they misbehaved their guests. They misbehaved their guests. The soul is not mortal. Not mortal पे हमें लिखि परिबा immortal. The soul is immortal. Okay. तापर हम देखिबा I block. Let's learn language. Before I reached the school, the boys had all left. You know, this sentence, it's there in your in this chapter. So the sentence has two clauses. Both are in past tense. One of them is simple past, and the other is in the past perfect. The two events stated in the two clauses took place in the past, but at different points of time. One took place either than the other. The following diagram will help you understand it better. So पिले माने एटी गोटे कथा देखो. बेसिक क्लास रे मु ऑलरेडी तुमको कही थिली आमे पास्ट परफेक्ट रो यूज केते बेले करिबा व्हेन वी यूज टू एक्शंस एंड वन इफ वन वाज परफॉर्म्ड अर्लियर then in for that action we shall use past perfect. एमिति हबा आगुरु सेमिति हेई सारी थिला तो प्रथमे जो कामटा हेई सारी थिला आमे ताकू पास्ट परफेक्ट रे रखिबा आ लैटर जो कामटा हला आमे ताकू पास्ट इंडेफिनाइट बा पास्ट सिंपल रे रखिबा तो सही जिनसटा बेटी देखो देखो गोटे सेंटेंस देछि अर्लियर पास्ट रे द बॉयज हैड ऑल लेफ्ट आ रिसेंट पास्ट रे हला आई रीच्ड द स्कूल सेमिति आ गोटे देछि there is such another sentence in paragraph 3 of the text. Can you find it out? Yes. जदि देखिबो paragraph 3 रे गोटे टेक्स्ट अछि I told him what had happened. जहा घटी थिला मु तांको कहिली. सो वर्तमान देखो आमे ए सेक्शन को जिबा all guests arrive before the party started. So all guests had arrived. All guests, first one, had arrived. पहुंची सारी थिले. All guests had arrived before the party started. Before the party started. Second one, we dash for lunch after mother the eggs. ता माने आमे खाइबा को बसिलु मा अंडा गुडी को फ्राई करि सारिबा परे सो वी सैट एठी तार फॉर्म हला वी सैट आफ्टर द मदर had fried the eggs. Then the third one, when Mahatma Gandhi लिखिछि pass away India dash achieve her freedom. So when Mahatma Gandhi passed away, Mahatma Gandhi जेबे देह त्याग कले सेते बेल को भारत स्वाधीन हेई सारी थिला. Passed away India had achieved freedom. The train had left हबो प्लेटा देखो the train had left एठी हमें कौन यूज कले past perfect before they reached station. Then the fifth one, Namrata dash the letter after she write it. Namrata posted the letter after she had written it. After she had written it. The patient had died. The patient had died before the doctor came. Come ro past form da nabati came. The farmer kon habo had plowed. The farmer had plowed. P-L-O-U-G-S-T हल करि सारी थिला. Had plowed before he sowed seeds. Before he sowed
seed मंजी बुणिबा आगरु. Then the 8th one, the prizes had been given. देखो b comma give अच्छी parenthesis भितर यार correct form होबो the prizes had been given long before the cultural programs started. ओके सो पिले ये गोटे कथा देख ए प्रति सेंटेंस रे आम को मार्क करवा जो एक्शनटा रिसेंट पास्ट ताप आम यूज करवा पास्ट सिंपल एवं जोटा यू नो अर्लियर पास्ट प्रथम जो कमटा होता ताप आम पास्ट परफेक्ट यूज करवा. सो मुझे खाली कहीदे देख पास्ट परफेक्ट 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 and had been given दिया सॉरी थिला. so these are the past perfects. एबे देखो दी नंबर क्वेश्चन है look at the following sentences. if I had not acquired the little Sanskrit ... I should have found it difficult to take any interest. The incomplete sentences. The structure of the form if plus subject plus had not plus V3 plus something else, then the subject should have V3. So we use such type of unconditional sentences to talk about impossible or unreal or imaginary events in the past. Okay pile eti gote kotha dekho mu fundamental class रे you know टाइप 3 कंडीशनल स्टेटमेंट रो गोटे फॉर्मेट देइथिली आ तापर आमे किछि क्वेश्चन भी करी थिले. सो व्हाट एग्जैक्टली सेठी कोन थिला देखो टाइप 0 टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3. सो टाइप 3 रो फॉर्मेट कोन थिला इफ प्लस पास्ट परफेक्ट इफ प्लस पास्ट परफेक्ट फॉलोड बाय would have plus V3 or the past participle form. So if plus past perfect epote rahila would have V3. In the same way you can make here could have V3, would have V3 or might have V3. okay so बर्तमान एथरे कौन देख लिखी इफ प्लस सब्जेक्ट हैड नॉट V3. ओके इन द कंसेक्वेंस पार्ट सब्जेक्ट शुड हैव प्लस V3. ए टाइप रो कंडीशनल सेंटेंसेस वी यूज टू टॉक अबाउट इम्पॉसिबल अनरियल और इमेजिनरी इवेंट्स. ओके जदि एठी आमे ओके सॉरी पिले एटा उटा को दिथर लिखि देछि शुड हैव. ओके तेणु जदि गोटे सेंटेंस रे रहिला हमर एमती हला कोन देखो सी फॉर्मेट कोन लिखिछि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस V3. ओके एंड कंसेक्वेंसेस पार्ट रे कोन रखिछि हला परिणामटा कोन हेथांता ना सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस V3 शुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस द ऑब्जेक्ट पार्ट. तेणु एमती जदि आम गोटे सेंटेंस रो फॉर्मेट को बनैबा एटा थिला टाइप 3 कंडीशनल स्टेटमेंट बा सेंटेंस रो पैटर्न. आ ए जो पैटर्न टा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस V3 प्लस द रेस्ट पार्ट इन द इनिशियल पार्ट एंड इन द कंसेक्वेंसेस परिणाम स्वरूप सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस द रेस्ट पार्ट. यही फॉर्मेट रे आमे जदि गोटे सेंटेंस बनैबा से सेंटेंस कौन रिप्रेजेंट करिवो ना इम्पॉसिबल अनरियल और इमेजिनरी इवेंट्स इन द पास्ट. ओके तो ता ऊपर देखो वर्तमान गोटे एक्टिविटी करिबा कहिछि रीड द फॉलोइंग सिचुएशंस एंड राइट एन इफ सेंटेंस फॉर इच.
Note that an affirmative sentence is turned into a negative sentence and a negative sentence into an affirmative sentence. Also, you can use any one of the modals would, should, could or might in the main clause. मेन क्लॉज रे आम जेकोसी ये जो मॉडल गुड़ाक देती चार्टा मॉडल से जेकोसी गोटे व्यवहार करि परिबा. सो वन इज डन फॉर यू. देख कौन कहला दे डिड नॉट स्टार्ट अर्ली दे मिस्ड द ट्रेन. ओके ठीक है खाली कही दूची दे डिड नॉट स्टार्ट अर्ली से माने जल्दी बाहरले नाही एंड दे मिस्ड द ट्रेन से माने ट्रेन मिस कले. तेणु कौन है देख से माने जल्दी बाहरिले नाही एटा गोटे नेगेटिव सेंटेंस. याकू आम एबे ओडिया रे जदी कहिबा जदी से माने जल्दी बाहरी थांते ताहले से माने ट्रेन केबे मिस करी न थांते. सो यूजिंग दिस इफ क्लॉज आम पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस आउ नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस बनैबा. तेणु देख से कौन को लिखिला इफ दे हैड स्टार्टेड अर्ली दे वुडंट हैव मिस्ड देयर ट्रेन. से माने केबे भी से माने ट्रेन मिस करी न थांते. गोटे सकारात्मक दृष्टिकोण रे वाक्य को बनागला. तेणु सेकंड देख ही डिड नॉट फॉल इनटू द रिवर ही वाज नॉट ड्राउन्ड. So, if he had fallen into the river, he would have drowned. देखो मुझे लिखुची देख बोले आम सेकेंड बिटा देखा बर्तमान फर्स्ट बिटा तुम पे कर देची. सेकेंड बिटा देख he did not fall into the river सी पानी रे पड़ी नथिला and he was not drowned. ओके तेणु बर्तमान यहीटा को जदि ए सेंटेंस को आम जदि बनइबा तो कौन हम जदि से पानी रे पड़ी थांता ताहले हुए तो से पानी रे बुड़ी की मरी थांता. सो इफ ही हैड फॉलन इनटू द रिवर ही वुड हैव ड्राउन्ड. थर्ड देख लिखिला द सन वाज इन द राइट डायरेक्शन द फोटोग्राफ्स केम आउट वेरी वेल. याकू केमती बनइबा याकू बर्तमान नेगेटिव बनइबा. इफ द सन हैड नॉट बीन in the right direction the photographs wouldn't have come out very well. एबे देखो फोर्थ बिट I saw you I invited you to my party. so if I had not seen you गोटे पॉजिटिव टा को वर्तमान गोटे नेगेटिव बनइबा. if I had not seen you I couldn't have invited you to my party. The fifth one Lilima won a lottery she bought a good house. एटा गोटे पॉजिटिव सेंटेंस अछि याको इफ क्लॉज यूज करके नेगेटिव बनइबा. लाइक if Lilima had not won a lottery she could not have bought a good house. Sixth one the mangoes were not ripe they did not sell at a good price. एटा गोटे नेगेटिव सेंटेंस अछि आको एबे पॉजिटिव सेंटेंस बनइबा. if the mangoes had been ripe they would have sold at a good price. Subhra did not spend much second dela she had a lot of bank balance. एटा नेगेटिव अछि एबे आको पॉजिटिव रे बनइबा. if he did not spend much से बेसी पैसा खर्च कला नाही and she had a lot of बैंक बैलेंस. याकू जदि वर्तमान आर मोड चेंज करिबा इफ शुभ्रा हैड स्पेंड मच शी वुडंट हैव अ लॉट ऑफ बैंक बैलेंस. वर्तमान एटा नेगेटिव को आसिला. द फार्मर वर्कड हार्ड ही रिप्ड अ रिच हार्वेस्ट. चाषीटी भल परिश्रम कला जहाँफल कि से भल शस्य अमल कला. एबे नेगेटिव रे कौन बनइबा जदि चाषीटी भल कठिन परिश्रम करि नथांता ताले भल शस्य से अमल करि पारि नथांता. सो इफ द फार्मर हैड नॉट वर्कड हार्ड ही कुडंट हैव रिप्ड अ रिच हार्वेस्ट. सी भल फसल अमल करि पारि नथांता. ओके तापर देखो बर्तमान बी सेक्शन में देखा पुट द फॉर्म्स इन द ब्रैकेट्स इनटू देयर करेक्ट फॉर्म्स. ओके पेज नंबर 39 द सेंटेंस जस्ट बिफोर द लास्ट सेंटेंस. इफ आवर बॉयज हैड प्लेड वेल आवर टीम ब्रैकेट भीतर लिखी विन द मैच इजिली. सो ये फर्स्ट देखो आंसर है कौन
If our boys had played well, our team would have won the match. Our team would have jiti thanta, would have won the match easily. If Manisha not get the scholarship, she might have missed the chance of her studies abroad. If Manisha had not got the scholarship, if Manisha had not got the scholarship, the third bit, India would not have achieved her freedom if the Indians not fight. If the Indians had not fight. If the Indians had not fight. Crops would have been better if it had rained. If it had rained. Jaddi bhala barsa hei thanta. The fifth one. The government not be very popular. Not be ro am correct form lekhiba padibo. The government would not have been very popular. The government would not have been, be ro past participle hela kono, been very popular, very unpopular. The government would not have been very unpopular. The sixth one, if you take my advice. So if you take my advice हमको एपटे past perfect करने को पड़िबो, कारण सेपट लिखिछि you would not have got into troubles. So if you had taken my advice, so if you had taken my advice, then the seventh one, the glass would not have been broken if she had not dropped it. So the glass would not have been broken, would not have been broken. Dot, dot, dot. Okay, so say puruna kotha authore कहूची, if plus past perfect followed by would have V3 or could have V3 or might have V3 or should have V3. एबे देखिबा आमे 3 नंबर केस टा, fill in the blanks with correct prepositions choosing from the box. Okay, एटा कहि दोची पहिले देखो, she was deeply ashamed. Okay, so page number 40 question 3, first, second and all. So she was deeply ashamed. Correct preposition kon habo, she was deeply ashamed of her behavior at the party. People are of the opinion that price controls are losing ground. Third, the festival kicked off with traditional music and folk dances. The festival kicked off with traditional music and folk dances. Sweets were distributed among children. Charities are exempted from paying tax. India succeeded in winning the World Cup cricket that year. The officer was convicted of bank fraud. Okay. Ebe last dekhiba, let us write dechi. Write answer to the all questions under E and let's understand the text. E section में जो 52 क्वेश्चन देथिला ताकू कले. Write a paragraph in about 5 to 8 sentences on each of the topics given below. Gandhi as student, Gandhi's headmaster, Gandhi's Sanskrit and Persian teachers, Gandhi's attitude towards sports and handwriting. तो already books रे गुड़ा कर answer अच्छी, फिर भी मु तुमको कहूची. देखो, Gandhi as students 5 to 8 sentence रे हमको लिखिबा को पड़िबो. So how Gandhi about was a student. Like Gandhi was not regarded as a fool at the high school. He always enjoyed the affection of his teachers. And Gandhi never had a bad certificate of his progress and character.
देख सब जगह बही तुम अच्छी he won prizes after he passed out the second standard तो एमती बहुत गांधी एज अ स्टूडेंट ए सेंटेंस एथुरु तुम बहुत गुड़े सेंटेंसेस पाइबो likewise Gandhi's headmaster okay so Gandhi's headmaster देखो when Gandhi was in the 7th standard Dorabji Idulji Jimi was the headmaster and he was quite popular among the boys and as he was a disciplinarian and a man of method and a good teacher he made gymnastics and cricket compulsory for the boys of upper standard okay एमती बहुत सेंटेंसेस अच्छी जो गुड़ाक तुम लिखिपर फॉर द हेडमास्टर गांधी संस्कृत एंड पर्सियन टीचर्स ओके संस्कृत आउ पर्सियन टीचर को बाबद देख कौ थे लिखाई सो गांधी संस्कृत टीचर वाज अ हार्ड टास्क मास्टर एंक्सियस एज he thought to force the boys okay and whereas the Persian teacher was lenient and there was a short rivalry going on between the Sanskrit and Persian teacher okay the Sanskrit teacher was grieved बहुत दुख प्रकाश करिथिले when he sat in the Persian class ओके डिटेल स्टोरीटा बर्तमान एठी अच्छी तेणु एथुरु तुमे 5 रू 8 सेंटेंसेस भितर लिखिपर द नेम ऑफ हिज संस्कृत टीचर वाज कृष्ण शंकर पांड्या देन Gandhi's attitude towards the sports and handwriting ओके देख जो स्पोर्ट्स एंड हैंडराइटिंग बाबद जो लिखा है आम से कौन लिखिपर देख लाइक फ्रॉम द चैप्टर 2 गांधीज एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्पोर्ट्स से आम पाइपर जे गांधी हैड द फॉल्स नोशन दैट जिम्नास्टिक्स हैड नथिंग टू डू विथ एजुकेशन बट लैटर ऑन ही फेल्ट दैट फिजिकल ट्रेनिंग शुड हैव एज मच एज प्लेस इन द करिकुलम एज मेंटल ट्रेनिंग ओके तो ये जो जिनसटा यहाँ कला कौन अबाउट हिज अबाउट द व्हाट इज दैट अबाउट द स्पोर्ट्स एंड हैंडराइटिंग बाबद से लिखिं कौन इन द स्टैंजा 5 नंबर पैराग्राफ से लिखिं लाइक I am still paying the penalty for another neglect when I got the notion that I don't know whence I got the notion that good handwriting was not a necessary part of education bad handwriting jogu se kette regret karichhanti complete paragraph ta upare achi like when I saw the beautiful handwriting of lawyers and young men born and educated in South Africa, I was ashamed of myself and repented of my neglect. Our handwriting upare se gote suggestion भी young men और women को गोटे suggestion भी देइछंती like let the child learn his letters by observation as he does different objects such as flowers, birds and let him learn handwriting only after he has learned to draw objects तेणु गांधी कहते जे let a child learn handwriting only after he has learned to draw objects गछ हो पक्षी हो विभिन्न जीवजंतुंकर चित्र हो एगुड़ी को सुंदर रूप से करवा बा चित्र अंकन करिवार विद्याटा को टिके हस्तगत कला परे से अक्षर बा वर्ण अभ्यास करवा उचित यही कथाटा से लिखिं जहाँ फल कि तार सुंदर हैंडराइटिंग हो पारिबो ओके एंड द लास्ट वन राइट अ लेटर इन अबाउट 100 वर्ड्स टू योर पेनपल होचंदी पिले पत्र बंधु लाइक with whom it's our hobby to write the letters जो मान को निकट को आमे पत्र लिखु आजिका डेट रे तो ट्विटर आउ स्मार्ट कम्युनिकेशन सब आसी गलाडी किंतु पत्र लेखाटा मध्य गोटे समय इट वाज क्वाइट पॉपुलर सो राइट अ लेटर इन अबाउट 100 वर्ड्स टू योर पेन पाल टेलिंग हिम हर अबाउट गांधी एज अ पर्सन तो यहीटा को देख आम केमी लिखिपर व्हाट टाइप ऑफ पर्सन गांधी वाज सो
एटा लाइक आम एमती लिखिपर देख ये आई विल टेल यू द लास्ट क्वेश्चन सपोज आम सांग निकट को पत्र लिखुचे लाइक टू मन कर गोटे सांग है टू जॉन मन कर जॉन गोटे सांग ओके हियर योर एड्रेस शुड बी हियर आम लिखिले सो टू जॉन इट हैज बीन 4 years since we met okay and I hope you are well तुम्हें भलरे अच्छो from your letter I got to know that you want to know more, you want to know what type of person Mr. Gandhi was. Okay, so here I describe at my level best, एतिकी आम लिखिदेले ओके एतिकी लिखि सारा परे आम गांधी कौ टाइपर पर्सन थिले आम से कथा लिखा तो यही जो पर्सन यही कथाटा लिखला बेलू आम ये कौन देख पे लिखिपर सबू पाराग्राफ रु आमको किछि इंपोर्टेंट सेंटेंसेस लिखा पड़ो फॉर एग्जांपल गांधी वाज नॉट रिगार्डेड एज अ फूल एट द हाई स्कूल गांधी वाज क्वाइट कॉन्शियस अबाउट हिज कैरेक्टर than anything else then Gandhi was a good son why because he had the keen desire to serve as nurse to his father then Gandhi was a lifetime learner so he had a great affection with his teachers then Gandhi whenever Gandhi एमती बहुत कथा आम से लिखि परिबा Gandhi also tried his level best to learn many things so देख आम एतिकी लिखि सारा परे गांधी बाबद रे कौन लिखि परिबा Gandhi is popularly known as the father of our nation he had a great personality and he was an average student and he was enjoying or he always enjoyed the affection from his teachers he always talked to the rules and regulation and in the latter part of his life he became the great soul or he was called as Mahatma and he inspired movement for civil rights and freedom across the world है जो sentences गुड़ा को देखो तुम ये अच्छी पिले शेषकू Mohandas Karamchand Gandhi he was one of the India's greatest leader who employed non-violence to lead the successful campaign for India's independence from British rule then the story of my experiments with truth the second one is Hind Swaraj and Indian Home Rule are some leading books by Mahatma Gandhi okay so these things you can write so sesugu likhiba so I hope that you understand that which type of person Gandhi was okay so etiki likhiki ame it's a letter to your friend so books रे तुमको जेतिकी इनफॉरमेशन देइची सेथुरु बेस्ट ऑफ द बेस्ट इनफॉरमेशन को नहीं करी आमे गांधी कर गोटे इमेज रखी परिबा who doesn't know about Gandhi so we can write what exactly he was so
This was all about the question and answers of the topic at the high school.